A very warm welcome to all the aspiring SEBI Grade A officers. सुन के अच्छा लगता है ना, SEBI Grade A officer. सोचिए जब आप बन जाएंगे and it would be like Mr. X and Miss X, SEBI Grade A officer 2022 batch. Wow, what a feeling it would be, है ना? ड्रीम से वापिस आइए और फोकस कीजिए प्रिपरेशन पे. वी हैव अ ह्यूज माउंटेन टू क्लाइंब. आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर. कहीं ना कहीं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी देयर वुड बी क्वेश्चन इन योर माइंड, टू व्हाट एक्सटेंट आई नीड टू plan for numerical. Can I clear this exam without focusing on numerical? What type of numerical are important? Which chapters are important for numerical? Etc. 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 इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू वन थिंग. सेबी एग्जाम न्यूमेरिकल के बिना क्लियर करना मुश्किल ही नहीं, आई वुड से इम्पॉसिबल है ना? शाहरुख खान का डायलॉग है ना. बट एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना, न्यूमेरिकल को मास्टर करना टू द एक्सटेंट व्हाट इज आस्क्ड इन सेबी इज समथिंग रियली इजी, प्रोवाइडेड you have a focused and a directed approach. So that is what we will talk about in this video. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स की अगर बात करें, आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं. न्यूमेरिकल 3 ही कंपोनेंट्स में पूछे जाते हैं, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स. देयर आर 3 अदर कंपोनेंट्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कंपनी लॉ. देयर आर नो न्यूमेरिकल देयर, राइट? तो हमें इन 3 कंपोनेंट्स भी करने हैं. दैट आई होप यू आर अवेयर ऑफ. और अगर वेटेज की बात करें, वेटेज कम नहीं है, वेटेज इज ह्यूज. Last year in paper 2 phase 2 there were 11 questions, and 11 questions doesn't mean 11 marks here. It means 22 marks. 22 marks out of 100. I mean it can change the scenario whether you get into SEBI or whether you don't get into SEBI. और अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें तो फाइनेंस में 2 न्यूमेरिकल थे, कॉस्टिंग में there were 4 न्यूमेरिकल्स, and in commerce and accounts there were 5 न्यूमेरिकल. So all in all 11 numerical worth 22 marks from these 3 components. तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, कुछ चैप्टर्स हैं which are really important for numerical, and I'm not telling you this just based upon analysis of 2020 exam which was held in 2021, but I'm telling you this based upon the analysis of various other exams in which accounts or costing is asked. किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन, पावर ग्रिड, पीएफआरडीए, एनपीएस, आप जितने भी पेपर देखेंगे कॉन्स्टेंटली इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो वो चैप्टर्स कौन से हैं? इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस, इन फाइनेंस ये आपके 4 एरियाज हैं विच आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल. फर्स्ट इज डेरिवेटिव्स, राइट? देन रेशियोज. रेशियोज में से यू नीड टू नो अबाउट ऑल द रेशियोज, बेसिक फॉर्मूलाज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज. सारी रेशियोज में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट. कैश फ्लो इज अनदर चैप्टर फ्रॉम विच न्यूमेरिकल आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स. देन बॉन्ड प्राइसिंग एंड ऑल, but I would say do give less priority here, right? Only do it at the end if you have time. फिर आते हैं इक्विटी रिलेटेड बेसिक्स. ईपीएस क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है. ये 2-3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको इक्विटी वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगे. इनको भी आप जरूर कर लीजिएगा. दे आर वेरी बेसिक न्यूमेरिकल जस्ट बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला. ठीक है. सो दिस इज अबाउट फाइनेंस एंड रेशियोज में. सी अगेन आई वांट टू टेल यू कि न्यूमेरिकल आर नॉट आस्क्ड व्हिच आर रियली लेंथी और रियली कॉम्प्लेक्स. Ratios में there can be very complex numericals that they give you some complex balance sheet and you have to find a ratio which can be really testing at times. But this is not what exam is expecting you to be prepared for. They are expecting you to be prepared for some basic numerical understanding, basic formula understanding and the application of that. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 11 में से 11 बहुत ही पप्पू न्यूमेरिकल आने वाले हैं. 5-6 बहुत आसान होंगे, थोड़े 4-5 एप्लीकेशन वाले होंगे. आई टेल यू एट द एंड कैसे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं, वेयर यू हैव टू रिलेट 3 to 4 फॉर्मूलाज इन अ सिंगल क्वेश्चन. ये फाइनेंस की बात होगी. देन कमिंग टू कॉस्टिंग गाइस, दीज आर द 4 चैप्टर्स. प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें जिसमें हम पीवी रेशो,
ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दो तीन फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं को मरोड़ तरोड़ के दे कैन आस्क वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. So if you can understand that, you can solve all the numericals from marginal costing. Then coming to standard costing, seems tough, but again, even if you do the basic portion on material cost variance, labor cost variance, and overhead cost variance, you can now do lot of good here by scoring some extra marks which other people might not be able to do. और इसमें से overhead cost variance is little bit difficult. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो at least material cost variance and labor cost variance, please focus upon that. Then budget and budgetary control, more of a theoretical chapter with small numerical formulas being there in this chapter, right? So do all type of budget, sales budget, cash budget, depreciation in cash budget you must be aware of how it is handled. Then production budget, material purchase budget. There are around 7 to 8 budgets in budget and budgetary control that you should be aware of. So this is about costing. इसके बाहर भी सारे chapters में numerical हैं, but I think 90% numerical would be asked from this chapter, as we can see in the history not only of SEBI but all other exams, PFRDA, NPS and even other exams. Accounts की बात करें तो here I would say accounting standard is something which is really important. Accounting standard on property, plant and equipment, accounting standard on foreign exchange transactions, accounting standard on investment, these three are most important. Accounting standard on ESOPs and all you can leave, right? But if you have time, try to understand the concepts here because the numericals are going to be really easy. Even last year, the numericals which were based upon accounting standards were very easy, provided you have the conceptual understanding. Formula भी कोई ऐसा नहीं था कि जो आपको याद रखने वाला था उसमें. Then debit and credit. Accounts में देखिए वैसे तो they can even ask you to make a trial balance and a balance sheet from a trial balance, but then exam is objective. So here, I mean, they will ask you some basic questions on debit and credit. For example, अगर shares forfeit होते हैं तो कौन से account में जाके जो leftover money होगा कहाँ credit होगा? Capital reserve. If company buybacks the shares, then the amount equivalent to the face value of the shares has to be transferred or credited to which account? Capital redemption reserve. So ऐसे debit and credit entries in various scenarios. You will come across various scenarios in your course that you need to understand, right? And maybe cram at times, because in exam there would be direct question. Even if you don't remember what was the logic of crediting this account or debiting this account, if you can remember that, you will be able to get some good marks in those questions. So that is about accounts, right? So I hope you are able to assimilate that what all chapters are important in all these three components. Now relating to guidelines, I have been telling you again and again, basic numerical पे focus कीजिए. 11 में से एक दो tough भी आ गए, but rest 9 if you're able to do, that would be literally good, right? Last year, even if somebody could score 70, 75 out of 100 in paper 2, he most probably got through, provided he also scored 70 plus in English. ठीक है, तुम्हें 100 मार्क्स तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो 11 में से 8-9 न्यूमेरिकल भी हम कर रहे हैं, that is more than sufficient for us. ये वाला पार्ट जो आपको मैं कह रहा था कि you have to learn the art of connecting 2 or 3 formulas. फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, बट क्या बस वो एक ही फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकल जाएगा? नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज लाइक यू हैव टू यूज 2 or 3 formulas which are used in conjunction to reach the final answer. Let me give you an example here. Last year this was the question. आपको net profit ratio was given as 5%, total assets is 90 lakh, return on assets 9%, and you have to find the total asset turnover ratio. तो एक बार पहली बार आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, it would seem really difficult कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, but here if you would have used these 3 formulas, you could have calculated the answer within 1 minute. Since you are given return on total assets 9%, you are also given total assets as 90 lakh, you could find PAT from here, right? 9% is return on total assets is 90 lakh, you could find the PAT from here. Once you have find the PAT, you could have used this formula. PAT is given, net profit margin is given as 5%, you could have found the sales. And once you have found the sales, you can find what was asked in the question, total asset turnover ratio, because sales were given and total assets is also given as 90 lakh, and sales you have calculated from here, you could find the total asset turnover
ratio. So this is what I'm saying. You need to link different formulas. Different formulas need to be used in conjunction sometimes to reach your answer. And it is not difficult. The only difficult thing is to think that how to connect different formulas to reach the final solution. Right? So thanks for watching this video. तो end में मैं यही कहूँगा कि we don't have to be fearful of numericals, right? The biggest fear is in the mind. अगर आप उसको ओवरकम कर लें और इन चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस करके प्रैक्टिस करें, then you can easily overcome the roadblock that you are facing by the name of numerical. चलिए, thank you for watching this video. Have a nice day. Good night. Bye bye.